Getting clients in my agency was almost impossible when I was doing outreach. And even after running ads, it wasn't looking very good until I started using these three different methods to close 30 plus clients in my SMMA. अब ये सारे मेथड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे आप अपनी पर्टिकुलर स्टेज के हिसाब से क्लाइंट्स लेकर आ पाओ and basically अपनी एजेंसी में next level पहुंच पाओ. And the key point to remember over here is that in each of these three methods, I will not be talking about doing outreach because I know that you have been doing hundreds and hundreds of cold emails, cold DMs, cold calls, but you are not getting any luck. And that is why I'll be teaching you the skill and the method through which you'll be getting sales calls automatically without you having to put in lots of effort and basically your whole day outreaching to some bullshit people. The first method is when you don't have any clients basically, या फिर आपके पास सिर्फ 0 to 5 clients हैं एंड आप अभी बिल्कुल स्क्रैच से अपनी एजेंसी या एसएमएमए को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, विच मीन्स कि आपके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है एंड आपको अपने इनिशियल सेट ऑफ क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं. तो यहाँ पे मेरे लिए उस टाइम पे सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? द फर्स्ट चैलेंज वॉज मेरे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था किसी क्लाइंट के साथ एज सच काम करने में. सेकेंड थिंग वॉज दैट जो ट्रस्ट फैक्टर है, जब भी मैं किसी कॉल पे किसी के साथ क्लाइंट के साथ जाता था तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम रहता था, बिकॉज एक तो मेरे को सेल्स का ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था. सेकेंड कि लोग समझते थे कि क्या वो मुझे 10-15,000 रुपीज दे के भी मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उनके पैसे लेके भाग जाऊंगा, because they are like meeting virtually, so they don't have any idea where I live or something like that. So that is where the trust factor was very much missing. Okay, the third factor was कि मेरे पास कुछ भी client testimonials या कुछ भी case studies नहीं थी जो मैं अपने clients को जाके दिखा सकता था, sales calls पे जाके दिखा सकता था. Okay, so these 3 or 4 were the major shortcomings or major difficulties that I was having at that point of time. Okay, so अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए था एक ऐसा वे टू एक्वायर क्लाइंट्स विच वाज इनबाउंड. बेसिकली मुझे क्लाइंट के पास ना जाना पड़े और क्लाइंट मेरे पास आए सर्विसेज की रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वहां पे मेरा स्टेटस थोड़ा सा ऊपर होता, क्योंकि क्लाइंट मेरे पास आया इस बार. That is the one thing. So no outreach in this case and totally inbound and ads, which is what I am experienced in. So I am a media buyer, performance marketer by experience, so that is why I chose ads. The next thing was that I needed to send something to my client even though I didn't have any experience, जिससे थोड़ा सा और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो that this person has something ready for for his clients to show the workings and all, jisse he knows that this is a legit person who will not ghost me after paying. Okay, so that is the thing I wanted to establish. Now that is why from 0 to 5 clients, which is the very first stage of you starting an agency, मैंने उस टाइम पे क्या किया था, I implemented what is called the VSL funnel. Okay, now I'll talk more about this and tell you how it actually works. तो VSL funnel में you basically apply it when you have 0 to 5 clients, and the basic mechanism जिससे ये काम करता है वो ऐसा है कि पहले आप बेसिकली एक एड रन करते हो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, एंड वहां से जो भी ट्रैफिक आएगा एड पे वो आप इस एक लैंडिंग पेज पे भेजते हो. ओके, एंड द एड विच यू रन इज फॉर अ फ्री ट्रेनिंग. So you tell people that I have recorded a free training in your niche. So basically if you are in study abroad consultants niche, which is what I am in, so I'll record an ad that, hey study abroad consultants, I have recorded a free training for you on how you can get more students and more qualified leads so that you don't have to face X number of problems. So click on the button and watch the training now. So उसके बाद जब भी कोई इस एड पे क्लिक करेगा, they'll be on this landing page जहाँ पे उस ट्रेनिंग को एक्सेस कर सकते हैं by entering their name, email and phone number. तो जब लोग अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर एंटर करेंगे, they'll be able to watch something called as a VSL. Okay, so VSL is the exact free training that we are talking about. VSL is basically video sales letter, जहाँ पे आप अपनी नीश के टॉप 3 सीक्रेट्स को बस्ट करते हो
and then you basically convince them to basically think that they can't do it alone, and वो अपने अपने हिसाब से जब हाई क्वालिटी लीड्स लाने की कोशिश करेंगे, अपने आप से एडवर्टाइज करने की कोशिश करेंगे, so they'll not be able to do it because obviously they don't have the expertise and time as well. So what you do is you convince them to book a call with you, and at the end, basically you tell them that okay, if you want to book a call with me, there's a button below this video, you can click on it, you can get on my calendar and book a call with me. So when they click on your when they click on that button, they appear on this call booking page where they can book a call with you. Then after booking a call, they basically go to a thank you page, then a sales call happens, and then basically the closing and all happens. अब जब आपके पास 0 to 5 क्लाइंट्स हैं, आपके मेन एडवांटेजेस थे कि डिसएडवांटेजेस थे कि आपके पास ट्रस्ट फैक्टर नहीं था, जो इस फ्री ट्रेनिंग ने समवॉट सॉल्व कर दिया, क्योंकि आपका कोई 10-15 मिनट का कंटेंट देख के आ रहा है, सो दे आर समवॉट trustworthy, they are somewhat trust you. Second thing is that they don't see you as a newbie because again they have gone through some of your content, so that is another thing that they'll keep in mind when getting on a call with you. The third thing is obviously जब वो आपके साथ कॉल पे आ रहे हैं, you will follow a good process to convert them as your client. Okay, so this is the process that जो मैंने follow किया था जब मेरे पास बिल्कुल भी clients नहीं थे. Also a major advantage of this process is कि ये free होता है, free to start with. अब right now, like the other thing to keep in mind is that this is not at all limited to 0 to 5 clients, because uh, back till 4-5 months back, I was still using this VSL funnel to get clients for my agency, and it was working superb. Okay, I was even able to close clients at 60,000, 80,000, 1 lakh rupees using this VSL funnel only. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये VSL funnel सिर्फ 0 to 5 clients के लिए काम करता है. इसके कुछ disadvantages हैं for sure, जिसको solve करना मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है, but this is not at all limited to 0 to 5 clients. Okay, so अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कि ये VSL funnel काम कैसे करता है. अब मैं आपको exactly दिखाता हूँ कि मेरा VSL funnel अभी कैसे स्ट्रक्चर हो रखा है. Okay, so as you can see on your screen right now, this right here is my VSL funnel currently, which I used to run like 4 to 5 months back. Now I don't run it. I'll explain why. तो सबसे पहले free training for study abroad consultants enrolling at least 10 to 15 students per intake. This is what we are qualifying the people. The main headline which catches them to basically enter their details. Okay, so this is simply the landing page जिसकी मैं बात कर रहा था. So when a person clicks on here, they are able to enter their details and basically watch the free training. So जैसा कि यहाँ पे details entered है, मैं यहाँ पे watch now for free पे click करूँगा, and this will take me to a VSL. Okay, अब how this VSL is made is another story, but basically जब भी आप VSL को बना रहे होते हो, you have to keep 2-3 things in mind. When you are structuring a VSL, you have to bust the 3 biggest secrets in your industry जो कि वो लोग believe करते हैं. जैसे अगर मैं interior designers का example लूँ, so most interior designers rely on referrals to get clients. So why they shouldn't rely on referrals to get clients? Second, maybe that they use these Just Dial and third party websites. So why they shouldn't use these third party websites? उसको आपको myth को bust करना है. All in all, आपको उनको ये convince करना है कि क्यों आपका method बेस्ट है क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए. सो इफ आई एम सेलिंग Facebook ads and lead generation services, that is what I have to convince, that you should work with a proper marketing company who is dedicated to generate leads for your company. So this is what we have to convince in your VSL. So that is my entire goal of this VSL, that I am able to sell a free strategy call to them. So after they see this, what they'll do is they'll click on apply now, and what will happen is that they'll land on my calendar. So as you can see over here, strategy call with Team DigiMagnet. So they can choose a time and they can basically book a call with me, right? So also when they want to book a call with me, there are certain questions which they'll have to answer जिससे मैं उनको qualify कर पाऊँ या reject कर पाऊँ.
So that is what happens in the VSL funnel. Now the reason I was saying that it is the best for beginners to start is क्योंकि मैंने खुद ये जब मैं beginner था तो मैंने खुद VSL funnel से ही start किया था, और इसका reason ये था कि VSL funnel को operate करना बहुत simple है. Literally you don't need any tools, any fancy automations, any email marketing, this or that to operate a VSL. दूसरी चीज, कुछ लोग बात करते हैं कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट यू शुड स्पेंड एज लेस मनी एज पॉसिबल सो दैट यू आर नॉट मेकिंग अ लॉस. तो अब VSL फनल में जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, व्हाट आई डिड वाज आई मेड एन एड, and when somebody clicked on that ad they'd go on an instant form जो कि Facebook native होता है, so they'd enter their details on that Facebook form. Then in the next step there will be an option that you can watch this free training. When they clicked on that option, in the end page they land onto this VSL page and then they could book a call with me. अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो VSL का पेज था एंड जो कॉल बुकिंग का पेज था वो मैंने systeme.io पे होस्ट किया था, विच इज कंप्लीटली फ्री. आई डोंट इवन नीड टू परचेज अ डोमेन. एंड जो कैलेंडर था वो मैं कैलेंडली का फ्री वर्जन यूज कर रहा था उस टाइम पे. सो इट्स लाइक टोटली फ्री, ₹0, बस मैं एड स्पेंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से. सो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस VSL funnel because I wanted to waste as less money as possible, and that is why I would advise someone watching this video as well. So now this is the VSL funnel. अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली कि मैंने इस VSL funnel पे कितना स्पेंड कर रखा है, so that you basically get an idea how this funnel performs. So this is basically my ad account, and what I'll do is I'll just search for some ads over here. Cool. So let's see. तो अभी तक मैंने इस VSL funnel पे, as you can see, these are all the campaigns that I've run as VSL funnel. मैंने total अभी तक 53,000 rupees spend कर रखे हैं इस VSL funnel पे on this ad account. So if you go over here, there's an ad account, a Digimagnet 2 as well. So यहाँ पे भी मैंने VSL funnel पे I've spent quite a lot of money over here. So all in all अगर मैं दोनों ad accounts को plus करूँ, so I have spent somewhere around 80 to 85,000 on this specific VSL funnel. And जो मेरा यहाँ से front end ROAS रहा है VSL funnel से, वो 7 to 8 का रहा है, which means that you can do the calculation. So if I'm spending 1 rupee in on these ads, I'm making 8 rupees out. So basically जो भी सेल्स कॉल्स हो रही हैं, जब आप एंटायर कैलकुलेशन करोगे फ्रंट एंड पे, तो आई एम एबल टू साइन क्लाइंट्स हु आर गिविंग मी एन 8x रिटर्न ऑन फ्रंट एंड. जब वो रिन्यू करते हैं मेरे साथ, या जब वो थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ के लिए रिन्यू करते हैं, दैट इज द बैक एंड ROAS. तो अगर मैं उसको भी कैलकुलेट कर लूंगा, दैट विल बी इवन मोर. बट अभी के लिए हम सिर्फ फ्रंट एंड ROAS की बात कर रहे हैं. दैट इज व्हाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस VSL funnel, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था आई हैड नो मनी, तब इस VSL funnel ने ही मुझे कैश फ्लो बिल्ड करके दिया. ओके, बिकॉज आई लिटरली कुडंट स्पेंड एनीथिंग, and this VSL funnel actually helped me build my agency and the initial foundations for it, and that is why I really like this funnel. But अब मैं इस VSL funnel को क्यों थोड़ा सा डिस्करेज करता हूँ, अगर आप 10-15 क्लाइंट्स में पहुंच चुके हैं, या you have built cash flow, is क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. ओके, द मेजर डिसएडवांटेज जो मुझे VSL funnel पे होता है, that it is a perfect funnel to sign clients at 15,000, 20,000, 25,000 per month. जब आप उनके साथ, वो आपका वीडियो देख के आएंगे, फिर आप उनके साथ 1-on-1 कॉल करोगे, perfect funnel. If you want to charge that price, VSL funnel is the best. But जब आप थोड़ा सा हाई टिकट में जाना शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल 60,000, 80,000, 1 lakh, विच आई डू राइट नाउ, सो ओवर देयर इनफ ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता. मतलब जब भी आप VSL funnel ऑपरेट कर रहे हो, तो आइडली क्या हो रहा है कि जो भी आपकी नीश में आपको पर्सन देख रहा है, उसने आपका शुरू का 2 या 3 मिनट का वीडियो वाला पार्ट देखा, उसके बाद उसने आपके साथ कॉल बुक कर ली. नाउ वो कॉल पे आ गया एंड वो बिल्कुल कोल्ड है. So you have to do an excellent job, and you have to be an excellent salesperson to convince him to pay you on that call, which is very difficult. So that is why, क्योंकि इतना ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड हो पाता, इसीलिए वो जो हाई टिकट वाले क्लाइंट्स होते हैं उनको साइन करना इस VSL funnel से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट इसका भी एक सॉल्यूशन है, which I have not implemented yet, but I am yet to implement it. So
the solution to that is that you basically have a nurturing pipeline via WhatsApp. You basically nurture people before they come on the call, and hopefully they'll pay you. So that is the thing you can do with VSL funnel. Now, we have discussed the pros, we have discussed the cons. Okay, let's go on to the next funnel. And the next funnel right over here is the webinar funnel. अब जब मैं 12 क्लाइंट्स पे था, आई थिंक आई साइंड माय फर्स्ट 4-5 क्लाइंट्स वाया दिस राउट. फिर मैंने जो आगे क्लाइंट्स थे, फॉर एग्जांपल लाइक 6 टू आई मीन 18 to 20 क्लाइंट्स, वो मैंने प्रॉपर VSL फनल से साइन किए थे, दैट आई जस्ट शोड यू. लैंडिंग पेज, VSL, कॉल बुकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वहां पे आपको थोड़ा सा टूल कॉस्ट आ जाता है क्योंकि मेरे पास अभी हाई लेवल का सब्सक्रिप्शन है, सो दैट इज द कॉस्ट. बट once you have got past that threshold and आपको अभी भी आपको लगता है कि आपको 20-25,000 या 30,000 की सर्विस सेल करनी है, webinar funnel is actually the best means to get you to that next level. अब webinar funnel का VSL funnel पे advantage क्या है? दैट इज इट इज वेरी मच टाइम सेविंग. मतलब अगर कोई भी आपकी VSL फनल देख के आपके साथ एक सेल्स कॉल पे आता है, यू हैव टू गिव अ मिनिमम ऑफ 1 hour ऑन सेल्स कॉल फॉर देम टू पे यू. वेबिनार पे यू होस्ट अ 2 hour वेबिनार और मोर लाइक अ 90 minutes फ्री वेबिनार, एंड उस पे जो भी आपके साथ इंटरेस्टेड होगा दे विल बी एबल टू पे यू, एंड यू नो द टाइम बेसिकली इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. ओके, मतलब यहाँ पे अगर आप VSL फनल से 25,000 रुपीज चार्ज कर रहे थे अपनी सर्विसेज के लिए, वहां पे लेट्स सपोज VSL फनल में आप 25,000 रुपीज चार्ज कर रहे थे, आपको 10 सेल्स कॉल्स पे जाके एक क्लाइंट मिल रहा था, राइट? और लेट्स से इवन 10 सेल्स कॉल्स पे जाके आपको 2 क्लाइंट्स मिल रहे थे, यू आर गुड एट क्लोजिंग, which means that you are spending 10 hours on sales calls plus 2 or 3 more hours idhar udhar, which means that you are spending 12 to 13 hours to sign 2 clients and make 50,000 rupees. अब बात करते हैं वेबिनार फनल की. वेबिनार फनल में if you are spending like 5-6,000 rupees and you are able to pull in like 200 people in basically 200 people in your group and eventually 40 to 50 people who actually show up in your webinar, 2 conversions are very easily possible. मतलब हमने 2 घंटे का वेबिनार किया एंड लाइक 30-40 मिनट्स की और सेल्स कॉल्स की, जो आपका 1-on-1 बुलेट कॉल्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा. दैट मीन्स दैट यू आर एबल टू साइन 2 clients which are paying you the same 50,000 rupees and you spent only like 3 hours. So कहाँ 12 hours, कहाँ 3 hours. That is the difference between the webinar funnel. Plus it also kind of builds more trust than the VSL funnel, क्योंकि यहाँ पे आप 2 घंटे लोगों को लाइव एड्रेस कर रहे हो. दैट इज वाई. सो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो वेबिनार इज बेसिकली आइडली व्हेन यू आर ऑन 5 to 10 क्लाइंट्स के मार्क में. अब इसका रीजन ये है कि जब आप VSL फनल ऑपरेट कर रहे हो, यू डोंट नीड मेनी टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज टू शो ऑफ. बट वेबिनार पे आप तभी सेल कर पाओगे जब आपके पास टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज होंगी. That is why 5 to 10 clients. The structure is here. Free webinar ad. First of all, you run a free webinar ad. उसके बाद आप एक instant form पे उनसे details लेते हो. Again, tool cost is minimum over here. Instant form पे आपने उनका name, email, phone number लिया. Then वहां से उनका लास्ट स्टेप में आप redirect करोगे आप एक free WhatsApp ग्रुप में, जहाँ पे आप सारी webinar की details दोगे, link and all. वहां से WhatsApp ग्रुप से वेबिनार होगा. आइडियली 25% to 30% ऑफ पीपल शो अप फॉर द एक्चुअल वेबिनार ऑफ दोज हु आर इन द WhatsApp ग्रुप. वहां से वेबिनार पे आप उनको 2 घंटे पूरा लेक्चर दोगे, उनको पूरा सिखाओगे कि द टिपिकल वेबिनार स्क्रिप्ट वेयर यू बस्ट सम मिथ्स एंड देन बेसिकली यू सेल योर सर्विस. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप is that you give a 999, you take a 999 deposit. Basically you reveal your price on the webinar. You say that okay, usually I charge 50,000 for my services, but on this webinar specifically I'm charging 20,000 rupees. So whoever wants to enroll, give a 999 deposit, after which we'll be doing a quick one-on-one call to resolve your concerns, and then we'll be going ahead. 999 deposit, and after that you do a bullet call. So bullet call is essentially a 15-minute sales call. 15-minute sales call क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने पहले आपका 2 घंटे वेबिनार सुना, दे आर कन्विंस्ड, दे ट्रस्ट यू. सेकेंड, दे नो द प्राइस, उनको प्राइस पता है और उन्होंने आपको विलिंगली 999 का डिपॉजिट दिया है आपके साथ कॉल पे आने के लिए. सो दे नो द प्राइस, दे ट्रस्ट यू. द ओनली थिंग इज जस्ट टू सॉर्ट आउट द लॉजिस्टिक्स,
कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देना एंड देन यू आर रेडी टू गो अहेड, एंड दैट इज व्हाट द वेबिनार फनल एक्चुअली इज फॉर. अब मैं आपको इस वेबिनार फनल से रिजल्ट्स दिखाता हूँ जो मुझे आए हैं. ओके, सो वी डाइव इनटू माय एड अकाउंट अगेन and I'll search for webinar. Okay, cool. So you can see right over here. Right now I spent some 11,000 rupees on this webinar funnel specifically. And अगर हम leads की बात करें, so I would have got a lot of leads actually. Let's do the leads preset over here. So I spent 11,000 rupees on this webinar and see, I got 606 leads in my niche at a cost per lead of 18 rupees. Okay. So जो इस webinar funnel से मेरा ROAS रहा है, by spending these 11,000 rupees, I was able to pull in like 4 clients. Okay. And the reason I started this webinar funnel is because in the month of June or July, I guess, it was basically a dark phase in my life. Basically, they left my agency क्योंकि उनका off season चल रहा था उस time पे, and I suddenly, from having like 8-9 clients at a particular time, I went to having 0 clients. So that is the thing. I wanted some urgent cash flow, and that is why I started this webinar funnel. Because again, VSL funnel was not working at that time. I was not able to sign clients क्योंकि trust ही नहीं build हो पा रहा था. So that is why. So in that case, back in that time, I reduced my prices. पहले मैं 60,000 charge करता था for 2 months, which is like 30,000 per month. I reduced it to like 25,000 per month. But फिर मैंने सोचा कि मैं उसको 1-on-1 sell नहीं करूंगा. I'll sell it through a webinar क्योंकि वहां पे time बचेगा मेरा. So that is what I did, and the results were fruitful क्योंकि मैं वहां से I guess I pulled off like 4 clients at 25k, which means I got a 1 lakh front on revenue, which is like again a 10x, like a 9x ROAS front end, and back end ROAS में obviously you provide them good results, तो वो clients आपके साथ renew करेंगे. There's no way they won't. Okay, so this is the webinar funnel. अब while it all seems rosy, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है वेबिनार फनल में, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है. दूसरा एडवांटेज ये है कि आपका टाइम बच रहा है. सो व्हाइल दिस सीम्स वेरी फ्रूटफुल टू ऑपरेट, इसके अभी भी कुछ डिसएडवांटेजेस है. ओके, द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट इट इज अ वेरी रिस्की फनल इन इटसेल्फ. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक 3 वेबिनार्स किए हैं, आउट ऑफ विच आई हैव साइंड 4 clients. On the first 2 webinars, I signed 4 clients, 2 clients on each webinar. On the third webinar that I did, I spent 4,000 rupees on ads, and I got 20 people to show up, and nobody paid the 999 deposit, and it failed completely. So what that means is कि जब आप 1-on-1 कॉल्स कर रहे थे और आपकी कॉल्स पे अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, आपकी कॉल्स पे यू आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी पीपल, यू कैन ऑलवेज चेंज इट, यू कैन ऑलवेज चेंज द एड, यू कैन चेंज दिस, यू कैन चेंज दैट. वेबिनार फनल पे ये नहीं होता है. आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्वालिटी कैसी आ रही है लोगों की until and unless you do the webinar. And when you're doing the webinar, you have already wasted like 3-4,000 rupees of yours. So यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बहुत ज्यादा है बेसिकली, क्योंकि आपको रिजल्ट्स का तभी पता चलेगा when you are spending 100% of your money. You can't make any edits, you can't judge the lead quality, anything. You can't stop it in between, you just have to spend it. Result अच्छा आया तो भी congratulations, नहीं अच्छा आया तो you're screwed. That is the first disadvantage, which is it is very risky. Second disadvantage is that you can't sell high ticket. अब मैं अगर सोच लूं कि मुझे वेबिनार पे जाके 60,000, 80,000, 1 lakh की सर्विस सेल करनी है, this can't happen. Okay, if you're saying that oh it might happen, you have to trust, no, it can't happen. अगर आप वेबिनार पे जा रहे हो, you can only sell a service which is max to max 30,000, and उसमें भी फिर आपको, अगर आप एड सेल कर रहे हो तो उसके साथ आपको ऑटोमेशन सेल करना पड़ेगा, which is in itself a cost. These are the 2 disadvantages of the webinar funnel: risk and the inability to charge high ticket. अब जो थर्ड वे आता है, that is kind of a new way, जिसको मैं भी अभी टेस्ट कर रहा हूँ. सो while I am testing, I'll just show you the results. Okay, so the third way is कि जब आप you get past 10 clients, आपके पास results हैं, आपके पास case studies हैं शो ऑफ करने के लिए, and you want more clients at a high ticket price. अब जब आपके पास more than 5-10 clients होंगे अपनी एजेंसी में, आपके कुछ
तब भी इश्यूज होंगे एंड आई एड्रेस दिस राइट नाउ। तो जो उस टाइम पे मेरा सबसे पहला इशू था दैट इज कि मुझे हाई टिकट चार्ज करना था 80,000 1 लाख फॉर माई सर्विसेज। आई वॉजेंट एबल टू डू इट फ्रॉम द वेब VSL funnel, आई वॉजेंट एबल टू डू इट फ्रॉम द वेबिनार। सेकेंड, ट्रस्ट फैक्टर। अभी भी मुझे ऐसा लगता था कि जब भी लोग मुझे पे कर रहे हैं द हाई टिकट प्राइस, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जब मैं उनके साथ कभी भी जैसे 1-on-1 कॉल्स पे जाता था VSL फनल के थ्रू, तब मुझे उनको या तो उनके साथ बहुत नेगोशिएट करना पड़ता था या फिर मुझे उनको कुछ ऐसा ऑफर स्ट्रक्चर करके देना पड़ता था कि यू पे 50% राइट नाउ, 50% व्हेन यू गेट रिजल्ट्स, या ऐसे कुछ। तो 50-60% of people paid the money upfront, but it still was a hassle क्योंकि you have to make some promises, ideally which you shouldn't, to convince people to pay you. That is the main thing. क्योंकि when you are in the sales calls, ऐसी बहुत टेम्पटेशन होती है कि you just convince this person कि मेरे साथ sign up कर लो, आपका business 10x हो जाएगा, just to get that money. And that is what I was having, and that is honestly what I did. I pushed people really hard out of their comfort zone at a point at which they were uncomfortable with talking to me any further, just to get a deposit out of them. I like convinced people so hard in such a rough manner, and जो चीज मुझे भी kind of अच्छी नहीं लगती थी, but I had to do it to make money. So that is when I wanted to solve this problem, जहाँ पे मैं लोगों में trust build कर सकूं before they even get on a call with me. Second, I'm still able to command high ticket prices unlike a webinar funnel. So that is why I came up with this third funnel recently only, which is the course funnel. So अब ये funnel कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले I'll just warn you that it takes like a minimum of 10,000 rupees to get started. And I'm not talking about ads, I'm talking about building this funnel itself is like a 10,000 rupee matter. So that is why I always suggest कि आपके पास जब clients हो तभी आप ये funnel try करना. So basically how this course funnel works is that first of all you should have at least 10 clients, you should have case studies. So first of all there's an ad on Facebook or Instagram. Then when somebody clicks on an ad, they go to a sales page selling a 5 to 7 day course on how they can get more leads for their business. So if your niche is interior designers, you'll be designing a 299 or 399 course teaching people how they can get more leads in their business, and a 5 or 7 day course. The next step you do is nurture people through those 7 days. So यहाँ पे आपको WhatsApp automation चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप email पे 7 day का course भेजोगे, it wouldn't work out. Nobody checks those emails. So you need WhatsApp automation, and you have to send. So if it's a 7 day course in my case, so you have to send one video to them every single day after they make a purchase. How that happens is obviously through automations. In the 8th day of the course, you have the call booking page where they can apply to book a one-on-one call with you, and then you do a regular sales call with them and basically sell your services at high ticket. Side by side, you all obviously nurture them sideways. You continuously nurture them. Even after 7 days, you keep sending them WhatsApp message like one in a week. You are in the front end of their mind when they are looking to purchase a lead generation service. That is all I can say. So यहाँ से होगा क्या, you'll be able to sell your service on a high ticket क्योंकि आप one-on-one call पे उनके साथ जा रहे हो, which is the key to selling high ticket. Second thing is trust वाला चीज eliminate हो जाना चाहिए क्योंकि they are coming after consuming so much of your content. So this is the funnel that I have recently started. Structure तो मैंने आपको इसका बता दिया. Now let me show you the results I have got so far from it. So right now, as you can see, these are primarily the ads that I've been running for this funnel, and to be honest, मैंने इस पे ज़्यादा spend भी नहीं किया अभी. Yeah, I'll show you. This is a sheet that I've been maintaining for this webinar funnel specifically. So till now, I spent like 6,200 rupees, 300 rupees on this funnel over the past कितने? I guess 6-7 days. तो दिन भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ इसको शुरू किए हुए. Now, out of which I have got 146 add to carts. By the way, मैं 300 रुपए के प्राइस पे बेच रहा हूँ. And I've got 38 purchases from this so far at a cost per purchase of 165 rupees. तो मतलब मैं 300 के कोर्स को सेल करने के लिए 165 rupees एड्स पे लगा रहा हूँ.
Okay, so front end revenue that has been made is 11,000 rupees and front end ROAS is 1.81. So technically it seems like I'm making money at the front end क्योंकि मैंने 6,300 लगाया and I'm 11,300 पे मैं अभी setting. But the major problem is that I've already spent like 10,000 rupees on setting up this funnel alone to build the product, to host everything and stuff like that, automations and all. So yeah, technically I'll be if I sell like 100 quantity, I'll be somewhat profitable in the front end also, but the goal is obviously to sign clients, to make money by signing clients, by getting more booked calls, book sales calls of people who trust me. So that is the ultimate goal. एंड जो एक्चुअल जो रोआज आएगा, जो हम 9-10 रोआज की बात करते हैं, वो उसी से आएगा जब लोग मुझे मेरे साथ कॉल बुक करेंगे एंड 60-80,000 की सर्विस परचेज कर. सो these are the three funnels which you can use to sign clients, and you don't have to outreach in any of these cases. You just need the ability to make money through ads by spending money. So these are the three funnels. Make sure कि आप जो funnel apply कर रहे हो stage पे apply कर रहे हो, वरना all of it will be a mess. And if you like this video, after a long time I made a video which is very like raw without any editing and all. So if you like this video, please subscribe to this channel क्योंकि मैं यहाँ पे videos डालता रहता हूँ about SMMA and you know how to build your agency. So give it a like, subscribe, and अगर आपको ऐसे style की videos पसंद हो तो please मुझे बताना.